Raise hand. Tell me the formula for total energy, kinetic energy and potential energy. कौन बताएगा? Yes. First of all, what is the expression for total energy in SHM that we derived yesterday? Kinetic energy and potential energy. Yes. Who will tell? Yes, Samriddhi. मैम हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये किसका है? टोटल मैम एनर्जी। टोटल एनर्जी का। हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसमें वाई स्क्वायर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ एम वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम आर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही है तीनों एक्सप्रेशन। Okay, so now let us draw a graph. So we know that since these are involving square of displacement, so graphs can't be straight lines, they should be the parabolic lines, they should be the curved lines, right? So let us draw a graph. Here mean position we are taking, and this is suppose plus r extreme position. Means y equal to 0 here, y equal to plus r here, and let us say this is another extreme, y equal to minus r here. This is another extreme position. This is another extreme position. So first of all, let us see kinetic energy. Kinetic energy at the mean position. We discussed yesterday at mean position when y is 0, we put y 0 here and kinetic energy comes out to be maximum half m omega square r square, which is equal to total energy, maximum energy. Okay? And at mean position, if we see what is potential energy, when we put y 0 here, potential energy will be 0. Okay. Whereas at the extreme positions where y equal to plus minus r, at the extreme positions where y equal to plus minus r, ठीक है, वहां पे देखिए ये y r आ गया, r स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो गई. And how much is potential energy when we put y equal to r here? Potential energy will be equal to half m r square omega square, which is equal to total energy or maximum energy here. तो यहाँ पे मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, राइट? So let us mark points for kinetic energy first of all. Let's mark points for kinetic energy first of all. So mean position पे kinetic energy maximum है, तो कहीं यहाँ maximum हम लगा देते हैं. So this is kinetic energy. And at extreme positions, kinetic energy is 0. These are extreme. So this is the point for kinetic energy, and this is third point for kinetic energy. So we get 3 points corresponding to kinetic energy. So join a curve. This curve shows the variation of kinetic energy with distance from the mean position. So this is the graph showing variation of kinetic energy. All right, graph showing the variation of kinetic energy. Now let's mark the points for potential energy. At mean position, potential energy is minimum 0, and at extreme position, it is maximum. At extreme positions, it is maximum. So the corresponding graph will be again a curve, but it is like this. So this is, let us show it by a dotted line. So this is the variation of potential energy for this SHM. This is variation of potential energy. And total energy is always a constant. So join these points with a thick line. So let us say that the thick line is representing
energy, total energy. So this is the graph showing variation of kinetic potential and total energy in SHM. Okay, I hope this is clear to you. Any doubt in this graph, you can ask. Just by taking the expressions and discussing the positions, we have done this. So after SHM, we will come to types of oscillations. Next topic is types of oscillations or vibrations. Basically, there are three types of oscillations. There are three types of oscillations: free oscillations, forced oscillations, and resonant oscillations. Free, forced, and resonant. Free are also called natural oscillations. Free are also called natural oscillations. So free, forced, and resonant oscillations, these are three types of oscillations. These are three types of oscillations, right? Then, what are free oscillations? When an object is left to execute oscillations on its own, the oscillations will be called free or natural oscillations. हम एक बार ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग ऑन इट्स ओन. द ऑसिलेशंस आर फ्री ऑसिलेशंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल, वी अ चाइल्ड इज स्विंगिंग अ स्विंग. एक बार वो अपने आप को पुश करके छोड़ देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे स्विंग ऑसिलेट करती रहती. दीज आर फ्री और नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ द स्विंग. ठीक है. वी टेक अ सिंपल पेंडुलम, वी डिस्प्लेस इट वंस एंड देन वी रिलीज इट, तो ये अपने आप ऑसिलेट करता रहता है. So these are free or natural oscillations. So once the object is disturbed and it is left to execute oscillations on its own, these oscillations will be called free or natural oscillations. ठीक है. और इसका एग्जाम्पल है, a tabla membrane hit once and then left to oscillate. एक बार तबला की मेम्ब्रेन को हिट किया, थोड़ी देर उसका इफेक्ट रहता है, थोड़ी देर वो ऑसिलेट करती रहती है. So these oscillations are called free or natural oscillations. तो लिखिए definition, what are free or natural oscillations? When an object is left free to oscillate on its own, when an object is left free to oscillate on its own, when disturbed once, these are called free or natural oscillations of the object. Free or natural oscillations of the object. Okay, one more example लिख लो, तबला मेम्ब्रेन का, स्विंग का, सिंपल पेंडुलम का. One more is this tuning fork. This is a tuning fork. These are the prongs. This is the stem of tuning fork. This is the rubber pad. तो अगर एक prong को hit करें by holding it from the stem, तो हमें ये जो sound सुनती है, एक बार बस हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो देन इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशंस ऑन इट्स ओन. दीज ऑसिलेशंस आर फ्री और नेचुरल ऑसिलेशंस. ठीक है. बस एक प्रोंग को एक बार हिट किया तो हमें ये ईयर में मुझे साउंड सुन रही है. ठीक है. तो आपको भी शायद सुने. तो these are called free oscillations in this tuning fork, right? Now natural or free oscillations can be of two types.
These further can be of two types, damped or undamped. Damped or undamped oscillations. Damped oscillations जैसे अभी मैंने जितने भी एग्जांपल दिए वो सब oscillations उसमें damped ही हो रही हैं. Their amplitude goes on decreasing with the time. ठीक है, amplitude versus time, if we plot a graph for them, then amplitude goes on decreasing with the time. They die out after some time. एक सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब किया, will it keep oscillating forever? No, वो तो थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगा. Why? Because of friction of air. So some damping forces are acting on it. Okay, they bring the amplitude to zero after some time because energy is lost against that friction. Again, energy is lost against the resistance. ठीक है, तो अगर कोई डैम्पिंग एजेंट्स हैं, कोई रेजिस्टेंस कॉजिंग एजेंट्स हैं, then the amplitude will go on decreasing with time. Or you can say energy will go on decreasing with time. If we plot energy time graph for damped oscillations, then this type of graph we will observe that energy goes on decreasing with time. तो लिख लीजिए damped oscillations की definition. Damped oscillations. These are the oscillations in which amplitude goes on decreasing with time because of some resisting or damping forces. Okay, oscillations in which amplitude of oscillations goes on decreasing with time. Amplitude of oscillations goes on decreasing with time due to some damping forces, damping or resistive forces. Due to some damping or resistive forces. So you can plot both the graph. और एग्जाम्पल यही है, सिंपल पेंडुलम कुछ देर बाद रुक जाएगा. ठीक है, ये जो ट्यूनिंग फोर्क भी कुछ देर ऑसिलेट करेगा, बंद हो जाएगी इसकी वाइब्रेशंस. तबला मेम्ब्रेन एक बार हिट करोगे वो भी स्टॉप वाइब्रेटिंग आफ्टर सम टाइम. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस. नाउ व्हाट आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस वो हैं, बाय द नेम इट इज क्लियर, जो डैम्प नहीं होती, जिनमें एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, एनर्जी डज नॉट डिक्रीज विद टाइम. So how do they do it? How the amplitude of oscillations is maintained? For example, we operate a simple pendulum in vacuum. Then it will go on oscillating forever with the same amplitude. So that type of oscillation will be undamped oscillation. ठीक है? तो आप example दे सकते हो. For example, a simple pendulum operated in vacuum. It will go on oscillating forever. Right? Another example आप दे सकते हो कि या कि feedback दी जाए. ठीक है, या हम उसको रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ फीडबैक देते रहें कि उसकी एम्पली ऑसिलेशंस डाई आउट ना हो. सो समहाउ इफ इट इज डन, देन दीज ऑसिलेशंस विल बी कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस. सो राइट द डेफिनेशन ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड प्लॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ्स आल्सो. द ऑसिलेशंस whose amplitude remains constant with the time are undamped oscillations. The oscillations whose amplitude remains constant with the time are called undamped oscillations. They are called undamped oscillations. So their amplitude remains constant with time. It doesn't decrease with time. And energy also remains constant with time. Energy will remain constant. Energy dissipation will not take place. No loss of energy will take place because the amplitudes of oscillations is maintained. So energy is not being lost. That's why. This is the reason. So example लिख लीजिए. For example, a simple pendulum oscillating in vacuum. So it will maintain its amplitude, same amplitude ever, forever. Then forced oscillation, second type of oscillations we come to.
अब सपोज कर लो कि one person, you stand at the back of that swing and you give a regular periodic jerk to the child. अब child swing कर रहा था, थोड़ी देर बाद swing रुक गया. Now you stand at the back of the swing and give a regular periodic jerk each time when the swing comes back towards you. तो आप हर टाइम एक उसको jerk देते रहोगे तो वो स्विंग जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा. You are external periodic oscillator in this case. Same way, if we oscillate a simple pendulum, और जब भी ये इधर आता है हम उसको एक jerk देते जाएं, जब भी इधर आता है एक jerk देते जाएं, तो इस तरह से amplitude will never die up and the amplitude of oscillations will be maintained. So then this way we can undamp the oscillations also, right? तो अब but होगा क्या? एक तो उस बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस है and that external periodic oscillator is imposing its own frequency. उसने तो किसी और फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाया स्विंग को, स्विंग की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी थी. So in the beginning what will happen, there will be a tussle first of all between the two frequencies, natural and the frequency of external periodic oscillator. And then who will win? Who is building up or who is dying out? Obviously who is building up. तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी चल रही है, एक्सटर्नल पीरियोडिक ऑसिलेटर रेगुलरली ऑसिलेशंस प्रोवाइड करता जा रहा है, विल विन. सो द बॉडी विल स्टार्ट नाउ ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एक्सटर्नल पीरियोडिक ऑसिलेटर एंड नाउ द ऑसिलेशंस इन द बॉडी विल बी कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस. तो अब वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं कर रही है, वो एक एक्सटर्नल पीरियोडिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से oscillate कर रही है. So when the child starts swinging, when his parents they stand at the back and they give him a regular periodic jerk, तो वो पेरेंट्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन से स्विंग चल रहा है. अब वो चाइल्ड की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एग्जीक्यूट नहीं कर रही, ठीक है, वो एक एक्सटर्नल पीरियोडिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है. सो दीस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस. ठीक है, एग्जांपल एक तो स्विंग वाला हो गया. अनदर एग्जांपल इज रैटलिंग ऑफ विंडो पेन्स ड्यू टू लाउड म्यूजिक. कहीं पे लाउड म्यूजिक चल रहा है आपके, या फिर बहुत स्पीड से कोई व्हीकल निकल के गया है, तो आपके जो विंडो पेन्स हैं रूम के वो थोड़े से शेकिंग स्टार्ट हो गई. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन. रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बस पार्ट्स व्हेन द बस पासेस ओवर अ पिच. तो बस जब पिच से पास करती है तो ऑसिलेट करती है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने स्टार्ट कर देते हैं. उसके जो बस पार्ट्स होते हैं वो भी फोर्स्ड ऑसिलेशंस होती है, उसकी अपनी ऑसिलेशंस नहीं होती, राइट? सो लिखिए एग्जांपल फोर्स्ड ऑसिलेशंस का. फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती है? राइट डाउन. When an object starts oscillating with the frequency of an external periodic oscillator. When an object starts oscillating with the frequency of an external periodic oscillator. External periodic oscillator, then the oscillations are called forced oscillations. Then the oscillations are called forced oscillations. ठीक है, तो किसी और फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन इट्स ओन नेचुरल ऑसिलेशंस आर डाइंग आउट and it starts oscillating with some other forced frequency. So these oscillations are called forced oscillations. ठीक है, these are called forced oscillations. So example लिख लीजिए swing वाला कि हम पीछे खड़े हो जाते हैं, उसको jerk देते हैं. Rattling sound produced by bus parts when it passes over a pitch. ठीक है, then shaking of window panes due to loud music. These are all the examples of forced oscillations. I'll show you one more example of sonometer. This experiment we will do later on. तो देखिए इसमें experiment how they do it. They take this tuning fork again and this is a wooden box जिसको हम sonometer बोलते हैं. There is a wire on the sonometer box and when they set the tuning fork into natural oscillation and press the stem against that wooden box,
then the wooden box also starts vibrating with forced vibrations, and the sonometer wire also starts vibrating with forced oscillation, with the oscillations of that tuning fork, that external periodic oscillator. तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं, थोड़ा सा पार्ट देखिए. Make it vibrate by striking its prong with a rubber pad. Touch the lower end of the handle of the vibrating tuning fork with the sonometer board. Now, we can see vibrations on the string. Decrease the length of the string by gently adjusting the bridges inwards. At a certain length, okay. So this is how it is done. When this vibrating tuning fork, its stem is placed on the sonometer box, then the whole box, it's hollow from inside. The whole air inside the box starts vibrating. The wire also starts vibrating with forced oscillation. So ये भी आप बता सकते हैं that vibrating sonometer wire, when a tuning fork is placed, vibrating tuning fork is placed on it, these are also example of forced oscillations. ठीक है. Next, third type है resonant oscillation. So you must have heard the word resonance. अब क्या होता है कि by chance if the frequency of external periodic oscillator matches the natural frequency of oscillations of the body, मतलब अगर वो जो oscillator भी उसी frequency से oscillations provide कर रहा है जो body की अपनी natural frequency थी, frequency matching takes place, right? And amplitude of oscillations becomes exceptionally large. Okay, under that situation, the amplitude of oscillations becomes exceptionally large, and we call those oscillations resonant oscillation. We say that resonance has taken place. ठीक है? So you got it? जब दोनों की frequency by chance same हो जाए, तो amplitude exceptionally large हो जाएगा oscillations का. And then we will say that resonance has taken place. Okay, you must have heard of loud opera music, and due to that a glass breaks. These pictures are available on the net. तो ये resonance का example है. मतलब कि मैचिंग होगी तो ग्लास टूट ही गया. ग्लास का शेक होना वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है. विंडो पेन्स का शेक होना फोर्स्ड ऑसिलेशन है. बट ब्रेकिंग ऑफ ग्लास और ब्रेकिंग ऑफ विंडो पेन्स because of loud opera music, that is called resonant oscillation. This is the state of resonance. ठीक है, तो लिखिए definition. resonance क्या होती है? When the frequency of external periodic oscillator, when the frequency of external periodic oscillator matches with the natural frequency of oscillations of the object, when the frequency of external periodic oscillator matches with the natural frequency of oscillations of the object, maximum frequency of oscillations of the object, then amplitude of oscillations becomes very large. Amplitude of oscillations becomes very large and resonance takes place. Amplitude of oscillations becomes very large and resonance takes place. Resonance takes place. ठीक है? These vibrations are called resonant oscillations or resonant vibrations. ठीक है? अब देखो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, उस वायर सोनोमीटर वायर के ऊपर एक छोटा सा पेपर का राइडर रख देते हैं, पेपर का पीस रख देते हैं. ठीक है, एंड वी ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. हम वो जो वेजेस हैं, दो वुडन ब्लॉक्स हैं, उसके बीच में लेंथ वायर की चेंज करते रहते हैं, उसको रेजोनेंट लेंथ कहते हैं. एंड वी कीप ऑन प्रेसिंग द स्टेम ऑफ ऑसिलेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट द बॉक्स. So we keep on setting it into forced oscillations. When resonance takes place, एक ऐसी length आएगी जिसके लिए resonance हो जाएगी, and then the rider will fall away. Rider क्यों गिरा? Because amplitude of oscillation of wire has become exceptionally large. उस टाइम पे amplitude इतना ज्यादा हो गया and resonance has taken place. That's why the rider falls off. हम वो condition उसमें वो length हम ढूंढते हैं इस experiment.
ठीक है, we locate that length by trying out different combinations of resonant length. We find when the rider falls away. So when it falls away, we note down the reading. I show you how. The string vibrates vigorously and the paper rider falls, which shows the condition of resonance. Measure the length L1 of the string between the bridges using the meter scale. Now, bring the bridges closer and then slowly increase the length of the string till the paper rider falls. The corresponding length is noted as L2. Okay, so this is how we do the experiment. We go on changing the length, we keep on striking tuning fork against the sonometer box, and when the rider falls away, then we say that resonance has taken place. Okay, one more illustration of resonance. One more illustration of resonance. The example लिख लीजिए resonance का, breaking of a glass due to opera, due to loud music. और एक illustration है, an illustration of all these three types of oscillations. We take 4 simple pendulums, identical simple pendulums, but of different lengths. One is longer than A, one is shorter than A, one is of same size as A. एक का साइज बिल्कुल A के जितना है, लेंथ ऑफ थ्रेड बिल्कुल A के जितनी है. ठीक है, so we take 4 simple pendulums attached to a common ceiling, right? तो एक कॉमन सीलिंग के साथ अटैच्ड है, बट एक की लेंथ सेम है, बाकी दोनों की डिफरेंट है. Now what we will do, we will allow A to oscillate. A को disturb कर दिया. After some time we will see B, C and D will also start oscillating. इनको coupled oscillations कहते हैं when they are connected to common oscillation. एक से दूसरे पे oscillation ट्रांसफर हो रही है, इसको हम coupled oscillations कहते हैं, coupled pendulum कहते हैं इसको. अब B, C and D भी कुछ देर बाद oscillate करना start कर देंगे. Now oscillations of A are free or natural. A अपनी frequency से oscillate कर रहा है, वो free या natural oscillations है. The oscillations produced in B and C are forced oscillations because of different lengths. Of course, they are oscillating with different frequency. But oscillations produced in D, इसका amplitude कुछ ज़्यादा ही होगा. ये exceptionally large amplitude से oscillate कर रहा होगा because of resonance. ठीक है, ये बिल्कुल उतनी ही लेंथ है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी. And it will be oscillating with extra large amplitude and it will be executing resonant oscillations. So in one example, we are showing all the 3 types of oscillations: free, forced and resonant. A की free है, B और C की forced है और D की resonant है. ठीक है, noted down. B की oscillations कौन सी हैं? Resonant oscillation, D की. लास्ट पेंडुलम के ऑसिलेशन रेजोनेंट ऑसिलेशंस हैं. किसी को कोई डाउट इसमें? टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस आर क्लियर. नाउ यू कैन राइट वन मोर क्वेश्चन. सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेक स्टेप्स. लिखिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपको बुक्स में मिलेगा. सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेक स्टेप्स व्हाइल डूइंग मार्च पास्ट ओवर अ ब्रिज. Soldiers are advised to break steps while doing march past over a bridge. तो जब soldiers march past करते हुए एक ब्रिज के ऊपर से निकले, उनको कहते हैं कि बीच में रुक जाओ कहीं पे, अपने स्टेप्स को ब्रेक करने को बोला जाता है, so that resonance may not take place. अगर frequency of footsteps matches with natural frequency of oscillations of the bridge and bridge is not capable of oscillating, it will collapse. तो वो collapse ना कर जाए bridge. That's why the soldiers are advised to break steps in between, कि resonance से कहीं bridge collapse ही ना हो जाए. ठीक है? Is this reasoning clear to you? Why are the soldiers advised to break steps in between? If it is not clear, students, you can raise hands. सबको clear है? If it is not clear, you can ask.
यस जपनजोत बोलो। मैम एक बार रिपीट कर दो ये रीजन। हाँ, इसमें क्या होता है कि इफ मोनोटोनसली द सोल्जर्स दे डू मार्च पास्ट एंड दे क्रॉस अ ब्रिज, then the frequency of footsteps might match with the natural frequency of oscillations of the bridge, and if resonance takes place then amplitude of oscillation of bridge will become very large. और bridge कोई oscillate करने के लिए थोड़ी बनाया गया है, वो ऐसी चीज है अगर वो oscillate करेगी तो वो टूट जाएगी. So if its amplitude increases it may collapse. ठीक है, so that's why they are advised to break steps in between, कि बीच में थोड़ा सा रुक के चलो, एकदम से मोनोटनी में सेम रिदम में मार्च पास्ट करते हुए मत चलो. So this is how resonance is avoided there. Another example, you must have seen that during earthquakes some buildings fall and some buildings don't fall. तो उसमें रीजन क्या होता है कि when the earthquake waves they are spread in the ground, then the buildings also start vibrating a little, right? Now, if the frequency of earthquake wave matches with natural frequency of oscillation of a particular building, then its amplitude of oscillation becomes large and it starts vibrating more. And since it is not capable of oscillating, it's not a flexible thing, it falls. तो कुछ घर गिरते हैं, कुछ बिल्डिंग्स गिरती हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स जिनकी फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक वेव से मैच कर जाती है, बाकी नहीं गिरते. ठीक है, so if the resonance takes place then the buildings will fall. तो ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए as an example of resonance. Why do some buildings fall during earthquakes? Why do some buildings fall during earthquakes? So then you will say if the frequency of earthquake waves, frequency of oscillation of earthquake waves matches with natural frequency of oscillation of a building, matches with natural frequency of oscillation of a building, then amplitude of oscillation of building will become very large. It is not capable of oscillating, it will fall, it will collapse. Okay? So is that clear? Yes, students?